Good evening, good evening, good evening, beta. Today we are going to start with Accounting Standard 24, which is discontinuing operation. I hope you are done with the Accounting Standard 18, that is related party disclosure. But before starting any session, beta, first we will quickly revise all accounting standards together. Number 1 is disclosure of accounting policy. Number 2 is inventory valuation. Number 3, cash flow statement. Number 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. Number 5 is net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy. 6, beta, removed. 7 is a construction contract. 8 is removed. 9 is revenue recognition. 10 is property, plant and equipment. 11 is effects of changes in foreign exchange rate. 12 number accounting for government grant. 13 is accounting for investment. 14 is accounting for amalgamation. 15 employee benefits. 16 borrowing cost. 17 segment reporting. 18 related party disclosures. 19 leases. 20 earning per share. 21 is consolidated financial statement. 22 accounting for taxes on income. 23 is investment in associates in consolidated financial statement. Consolidated. 24 is discontinuing operations. 25 is interim financial reporting. 26 intangible asset. 27 investment in joint venture. 28 impairment of assets, and 29 provision contingent liability and contingent assets. I hope you are aware about all these names now. Yes, tell me, आपने मेरा स्पीड कैच किया या नहीं किया? Tell me it in the comment section. Have you matched my speed? Good evening, good evening, good evening. Yes, Aisha. Good evening, beta. Rishi, Vandana ji, Neha ji, Parar ji. आयशा बहुत दिनों के बाद आए. जय पटेल, शिवानी जी, स्वाति, दुर्गा, पार्थ, यस, राम संस्करण जी. चलिए, चलो गुड इवनिंग बोल दीजिए बेटा फटाफट कमेंट सेक्शन में. इन लास्ट सेशन बेटा वी हैव फिनिश विथ गुंजन देवी टेलिंग मी, सर क्या आप चैप्टर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 2 फिर से बता सकते हो? करंट परचेसिंग पावर का ओपनिंग कैपिटल समझ में नहीं आया. ओके बेटा, यस, टाइम एक सेशन हमें एक्स्ट्रा मिला हुआ है. इन दैट आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेरी, डोंट वरी बेटा. यस, S18, S18, S18. सर माई स्पीड इज 51 seconds. व्हाट अबाउट माई स्पीड बेटा? सर क्वेश्चंस ऑफ S18 बेटा. यस ऋषि, वी आर गोइंग टू फिनिश इट. थोड़ा डिफिकल्ट है सर आपके स्पीड को मैच करना. नो प्रॉब्लम बेटा निनाद, हो जाएगा ओवर द पीरियड. चलो गुड इवनिंग बोल दीजिए बेटा, अच्छा लगता है आप लोग गुड इवनिंग बोलते हैं तो. चलो ज्वाइन हो जाइए, कम फास्ट. आज रिकॉर्ड ब्रेक करना है वापस से. मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा, इंडिया अफगानिस्तान मैच होने दो या कुछ भी होने दो, हमारा सेशन चालू रहेगा. और इंडिया पाकिस्तान के दिन बेटा हमारे सेशन है ऑन सैटरडे, सो डोंट मिस इट. मैचेस तो चलते रहेंगे बेटा. यस, चलो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए भैया. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट S18. डोंट वरी बेटा, S18 हम लोग कंप्लीट करने वाले. फर्स्ट, and I'm giving you time. Yes, have you done writing part? लास्ट सेशन में ही बताया था मैंने. हैव यू फिनिश विद योर राइटिंग पार्ट बेटा? चलो चलो चलो, ज्वाइन फास्ट. क्यों लेट ज्वाइन होता है आप लोगों का? Related party transaction. First, today I am going to explain the standard because we have to finish with some examples. Okay, still we have to complete some examples. Yes, writing part over beta. Writing part we have finished. Yes, and I am good. लास्ट का कंटेंट नहीं समझा. यस, ओके. राइटिंग पार्ट ओवर ना, ठीक है. चलो, so let's understand what is the overview of this standard. Introduction, definition of related party, then related party relationships. So relationships we have to understand, associates and joint venture. Then we have to understand holding and subsidiary company, need for disclosure. So this is the last part of this accounting standard. So let's start with yes, last part is consequences of RTPs, related party transactions, RPTs. Chalo,
आर्म्स लेंथ के बारे में बता दीजिए। ओके, मिस्टर सारवाना जी इज आस्किंग फॉर माई एज, ओनली 16 ईयर्स, ओनली 16 ईयर्स। और किसको क्या क्वेश्चन है? ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। टीवाई के आंसर्स भी दे देता हूँ, यस बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज टीवाई के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड S24 की थ्योरी। ओके, इन फर्स्ट हाफ, S24 की थ्योरी इन द सेकंड हाफ। चलो, S18 prescribes. What is the prescription? Yes, beta, disclosure. What you have to disclose? Related party transactions between reporting enterprise ITC, and its related parties. That list, associates, subsidiaries, joint venture, list is there. Okay, ठीक है, सर समझ में आया। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईच एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, as also to CFAs. Okay, sir, related party transaction not only in the standalone balance sheet. You are aware about that. Now, ITC ka I have shown you the report. You have to present standalone balance sheet also and consolidated balance sheet also. Consolidated means group of subsidiaries together. So we form consolidation, we have a separate chapter. So just try to understand there are two types of sets. One set is SFS, that is standalone balance sheet, and second one is CFS, that is a consolidated balance sheet. एक होता है standalone और एक होता है consolidation. Consolidation बेटा मतलब मैं सिर्फ मेरे घर के बारे में बात करूंगा, और मैं मेरे घर के बारे में प्लस मेरी बहन होगी, मेरा भाई होगा, ये सबको मैं साथ में लेके चल रहा हूं, तो वो कंसोलिडेशन होता है। ओके, so consolidated balance sheet is different and standalone balance sheet is different. Okay, चलिए नेक्स्ट वन, चलिए आगे जाते हैं। तो सीएफएस के बारे में आपको समझ में आ चुका है। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, सर व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, डेफिनेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। एनी टाइम सर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एनी टाइम वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ओके, एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड वन पार्टी has ability to control. So what is control? Control means you will dictate that person. Okay, control मतलब आप जो person को dictate करते हो कि you have to be you have to listen all these things. You are controlling him. Okay, so what is controlling? Beta, you are controlling your father and mother. Controlling your life is called as control. Means they take decisions. Okay, so that is a control. And second one is significant influence. Now, what is the significant influence? Try to understand. Your mom and dad, they take every decision. Yes, beta, you have to join these classes. Beta, you have to early wake up at 5 o'clock. Everything they are controlling. Okay, so that is the ability to control you. Okay, all formulation of policies are done by your mom and dad. Second one, your elder brother and your elder sister, they are not controlling your life, but they are giving you guidance कि देख भाई लाइफ में ये हो सकता है, यू टेक अ डिसीजन, तू ये मत बात कर, ये फ्रेंड तेरा अच्छा नहीं है, सो अच्छा नहीं है तो उससे बात मत कर, यू डोंट टॉक टू दिस फ्रेंड, आई डोंट थिंक इज गुड फ्रेंड. ओके, सो शी इज नॉट डिक्टेटिंग यू, शी इज गिविंग यू एडवाइस. whether to listen or not is depending on you, she or he, whatever the case. तो आपका भाई और बहन आपके लाइफ में बड़ा कंट्रोल नहीं कर रहे, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, ये बंदे के साथ तुझे कॉल नहीं करना है, सो दैट इज अ कंट्रोल. एंड यूर elder brother, he is giving you only some guidance. Guidance is different, they are not controlling your life. Okay, so control means all decisions were taken by your mom and dad. Guidance is significant influence. Got the difference? अरे yes or no, say in the comment section. चलो जल्दी से बताओ, significant influence मतलब समझ में आएगा? ओके,
चलो कॉमन कंट्रोल बेटा जो है पटेल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। यस, एनीवन इन्फ्लुएंस होता है वो अलग बेटा। सो ये दोनों केसेस में योर मॉम एंड डैड आर ऑल्सो रिलेटेड, योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर आर ऑल्सो रिलेटेड। तो ये रिलेटेड है, इतना याद रखो। चलो कुणाल जी, यस बेटा, द सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम सीए फाउंडेशन लॉ, यस ऋतुराज। अच्छा, तो ऑलरेडी यू डन। सर कंट्रोल कैसे एक्वायर किया जाए? बाय ओनिंग 50% ऑफ शेयर होल्डिंग। सर कंट्रोल कैसे आता है? तो बाय हैविंग, by taking shares. So this is a simple thing. You invest in the company 50% and more and take a control. Okay, then you have a control over that company. Second one, directly or indirectly. हाँ जी, directly or indirectly. Directly means I have taken shares of 50% and my subsidiary company has taken next subsidiary में 50%. Chain holding. Okay, it is called a chain. So indirectly on C I have a control. A, B, C में. Okay. By controlling, अरे वाह राहुल शर्मा ने बहुत भारी लिखा है बेटा। आफ्टर मैरिज वाइफ कंट्रोल्स एंड पेरेंट गाइड्स। बेटा मेरे केस में तो सभी कंट्रोल है, छोड़ दीजिए। चलिए, चलिए ओके। सो जोक्स अपार्ट, बाय कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जेब में लेके घूम रहे हो आप लोग। सो दिस इज कॉल्ड एज, दो यू डू नॉट हैव 50% मोर शेयर्स, but board of directors, you have so much respect in that company, everyone listens to your words, and that's why though you do not have shares, but you are controlling your board of directors. Sir रतन टाटा जी वो बैठ गए तो सबको सुनना पड़ेगा। ओके, तो सुनना पड़ेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे उनका कंट्रोल है। ओके, एंड थर्ड वन, हाँ हाँ बेटा नैन्सी जी हो सकती है। बाय एक्वायरिंग, हाँ जी, बाय एक्वायरिंग substantial interest, but in voting power you are directing। सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, पर वोटिंग में जब नाम आता है ना, तो डायरेक्ट और डिटेक्ट सब मैं करने वाला हूं। डिक्टेटिंग टर्म्स मेरे होंगे फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्लस ऑपरेटिंग पॉलिसीज। सर फाइनेंशियल पॉलिसीज प्लस ऑपरेटिंग पॉलिसी। सर चलो जल्दी से कंट्रोल के डेफिनेशन, एवरीवन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट फटाफट लिखना है आपको। ओनरशिप, कंट्रोलिंग, एक्वायरिंग, इंटरेस्ट, जल्दी से सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हाउ यू आर गोइंग टू रिसीव कंट्रोल ओवर एनी कंपनी। चलो जल्दी 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 लिखो। वेटिंग फॉर योर आंसर। आज का अटेंडेंस थोड़ा कम लग रहा है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। डेली अटेंडेंस आई वांट, फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट, फीडबैक्स भरते रहो अबाउट योर फैकल्टीज। सो कंट्रोलची ऑथॉरिटी कशी येणार सर? ओनरशिप घ्या 50%, कंट्रोल करा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स अँड एक्वायरिंग सबस्टॅन्शियल इंटरेस्ट इन द वोटिंग पावर। यस, चलो 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 चलो, कंट्रोल्स की डेफिनेशन को लिखो। एकदम मस्त चार्ट लग रहा है कि नहीं बेटा? एकदम टकाटक, फटाफट लिखिए।
सर जल्दी बताओ कंट्रोल कैसे आया एवरीवन. आई विल बी वेरी हैप्पी रे इफ यू आंसर इट. हाँ चलो एवरीवन आंसर. रिट्टो बैनर्जी जी आंसर्ड इट वेरी गुड. निनाद ने आंसर दिया ओनरशिप कंट्रोलिंग एंड एक्वायरिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब हाँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके आपने आपके फाइनेंशियल टर्म्स और ऑपरेटिंग पॉलिसीज को डिक्टेट किया. हिंदी में बता देता हूँ आइदर आइदर ओनरशिप ले लो 50% से ज्यादा या बोर्ड को कंट्रोल करो या ऐसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले लो ज्यादा इंटरेस्ट ले लो कि जो सामने वाले का जो वोटिंग होगा ना वो आपके फेवर में होना चाहिए कि आप ही बोलोगे कि ये पावर जो है ये मेरे पास होगी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी बस तू नाम के लिए है. ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी लोगों को आपने बोल दिया आप सिर्फ नाम के लिए हो. इसी तरीके से आप लोग कंट्रोल को एक्वायर करते हो. चलिए नेक्स्ट वन नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. डेफिनेशन में दो पार्ट्स थे. इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन एबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड एक्सरसाइज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का सेकंड पार्ट 20% इंटरेस्ट सर कंट्रोल के लिए 50 कंट्रोल के लिए 50 एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए मोर देन 20. एज्यूम दैट कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इफ कंपनी डिनाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Sir, I'm only investor. I have taken 30% shares of your company, but I'm not interested in your day-to-day activities. Sir, I am only investor. पैसा बहुत है भगवान का दिया हुआ. मैं आपके कंपनी में आके सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. वो भी 30% शेयर्स मैंने आपके कंपनी के लिए हुए. जस्ट आई एम एन इन्वेस्टर. आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द डिविडेंड और appreciation of my share. My interest in your company is zero. Then you have to demonstrate it. Then you have to prove it that you are only investor. If your company, then better your that company is not your associate company. Okay, and if you can disclose it, तो ये एसोसिएट का और आपका रिलेशन नहीं है. यू आर ओनली प्योर इन्वेस्टर. देन बेटा यू हैव टू प्रूव इट. ओके इट्स ओके. एंड ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड. ओके ऑडिटर जो है वो सिर्फ देखने वाला है वो काटने वाला नहीं है. तो ये आपने प्रूव कर दिया खत्म हो गया. पर बेटा ये एक गलत चीज है. मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऑडिटर को डॉग बोला गया है. ये नहीं बोलना चाहिए. ओके ठीक है. अभी जिसने भी ये सेंटेंस बनाया होगा ठीक है ये बहुत गलत सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू मी. पर ऑडिट में ये फेवरेट हो चुका है. ओके बेटा कैसे बोला गया ना बेटा जिसने भी ये वर्ड निकाला. सो हम लोग किसी को मैनेजमेंट को जाके से एडवाइस दे सकते हैं. भाई वो लोगों ने प्रूव किया तो अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती ना. हम लोग किसी को गाइडेंस दो भाई. किसी को फोर्स मत करो अकाउंट्स बनाने को. नहीं अच्छा लगा ना आपको उनका अकाउंट गिव इट इन नोट्स टू अकाउंट्स. आपके पास पेन का बेटा सहारा है. पेन से लिखो कि ये कंपनी ऐसा कर रही है. आपको ये राइट दिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कि यदि आपको कोई कंपनी का ऑडिट करते टाइम कुछ चीजें आपको नहीं अच्छी लगी कुछ तो खामी है अकाउंटिंग में तो बेटा आपको क्या करना है वहां पे आपको ये सीधा रिपोर्ट में मेंशन करना है. ऑडिट में तो सर ने पढ़ाई होगा बहुत अच्छे से कि ऑडिट मतलब क्या है. चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एंड गिव योर ओपिनियन. तो बेटा उस टाइम पे आपने को किसी को काटना नहीं है कि भाई तुम्हारी कंपनी प्रूव करो 20% से ज्यादा शेयर्स दिए. इफ दे आर टेलिंग यू वी आर ओनली इन्वेस्टर कंपनी सी वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी डिसीजंस. We are just there because we have more than 20% shares. So it doesn't mean that we are interested in their day-to-day activities. No. And if they can prove it, then better they are not associates. Okay. Though having more than 20% shares. So you got the concept, significant influence का. Say yes or no it in the comment section. फटाफट बोल दीजिए. हाँ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना. ओके सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा लगता है पर जरूरी नहीं है भाई कि वहां पे जाके डेली बैठ ही जाए. ओके सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. फनी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ बेटा बट दिस इज आईसीआई प्लेटफॉर्म सो आई कैन नॉट गिव यू ऑल दीज एग्जांपल्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आई कैन मेक इट इंटरेस्टिंग इन अनदर वे बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. दिस इज अ ऑफिशियल बोर्ड तो आई कैन नॉट गिव सच एग्जांपल्स दो. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर इट बट पब्लिक प्लेटफॉर्म है भाई. इंस्टीट्यूट है.
यस, चलो, ओके. Now significant influence. How you are getting significant influence? RIP MD, RIP MD. Okay, Haji, RIP MD. What is RE? R for representation on the board. R for representation on the board. Participation matlab P. Participation on policy making. And I for interchange of manager personnel. Next, material intercompany transactions and dependence on technical information. So these are some significant influence. So these are some examples for having significant influence, that you have representation on the board. You are participating. You're not controlling. You're participating. One company can interchange their main persons to another with another company. That is interchange of manager personnel. Third one is a material intercompany transactions, or last one is dependence of technical information. So this is how you are going to acquire significant influence. RIP MD. याद रहेगा बेटा, RIP MD. चलो याद करो. Yes. RIP MD आपको समझ में आया होगा, ऐसे आशा करता हूं. How to acquire the significant influence. लिखो बिना देखे. Yes, write down all these 5 RIP MD. चलो. Yes, fast, fast, fast. Okay, no problem, Karthik ji. So how you are going to acquire this significant influence? Representation on the board, participation on the policy making decision, interchange of manager personnel, material intercompany transactions, and dependence on the technical information. Okay. I hope you are getting all these 5 points. But screenshots were already taken in the last session. Yes, MRP ID can be 1. Over. Please type it fast. So material intercompany transaction means you are selling to your associate company. So this can be one of the acquiring. So you can dictate or significant influence to that company, not dictate. You can influence the decision of that company. So material transaction. See, means suppose company X and company Y. So company Y board represented by company X board of directors. Okay. Then company X participates on the policy making decisions. You can interchange manager personnel from company X to company Y. There are material intercompany transaction, means there is heavy purchase sale between two companies. And company Y is depending on technical information of technical information on company X. Okay, so they are dependent. In that case, it is called as significant influence. इसको हम लोग बोलते हैं significant influence. Got the concept? Say yes or no. इंटरचेंज मतलब बेटा आप एक दूसरे के कंपनी में मेन जो हेड पोजीशन है वो जाके वहां पे कुछ हेल्प करती है, उसको बोलने का यस, मैनेजर पर्सोनल का इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाना. ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. चलिए,
So now we are going to understand what is related party relationship. So talking about related party relationship. See, beta, before starting this accounting standard, I already told you this accounting standard is one of the, theoretical standard. And how to write the answer is the big task. This standard is very easy to understand, but very difficult to write. And that's why you have to by heart some provisions. Okay. Clause A. Do you remember clause A? Can you explain it in the simple way? Yes, beta. What is clause A? Kaun explain karega? So this should be interactive session. What is clause A, beta? Yes, very good. Yogini ji, very good. Manodhar Yadav, very good. Manohar Yadav, sorry. चलो जल्दी बताओ व्हाट इज क्लॉज ए चलो नो नीड टू रेफर योर स्टडी मटेरियल नो नीड टू रेफर स्टडी मटेरियल व्हाट इज क्लॉज ए कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज क्लॉज ए क्लॉज ए के बारे में बताओ जल्दी से हाँ एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली through one or more intermediaries. Controls, sir already told you this definition, or is controlled by or in common control with, sir, the reporting enterprise. Already taught this. So already taught this provision. Enterprise directly or indirectly controls. Controls means our company's holding company is controlled by subsidiary and common control fellow subsidiary. So already taught in the last example. बेटा ये ऑलरेडी सिखा दिया है बेटा ये प्लीज ऑलरेडी सिखा दिया डोंट टेल मी कि ये एग्जांपल नहीं हुआ है यस कैन यू रिकॉल दिस एग्जांपल विच एंटरप्राइज बेटा वेरी गुड वेरी गुड शिवम बहुत बढ़िया बेटा बहुत भारी एग्जांपल देते हो तुम टू ब्रदर्स कॉमन कंट्रोल विद का ठीक है आर लिमिटेड ओ इलू 4 क्लॉज बी जेठालाल बबीता का एग्जांपल था क्या क्लॉज बी associate and joint venture of reporting enterprise. An investing party or venture in which reporting enterprise and associate or JV. So clause B is different. Associates and joint venture of reporting enterprise or investing party or venture in which reporting party is associate. So my associate where I have invested 20%. So that company is also having one of the holding company. So holding an associate relationship. Holding CFS nahi. So here I am holding
in clause 1 and my associate. For that associate, investing party is a related party. Okay, so A has investment of 20% or more in B. तो A के लिए B is related and B के लिए A is related. Okay, okay. Next, clause C. What is clause C? Clause C क्या था बेटा? Clause C क्या था? Clause C क्या था बेटा? चलो, yes. Indirectly is not related. Associate का associated is not related. Very good. Next, individual and their relatives. Individual and their relatives, directly or indirectly, interest in voting power of the reporting enterprise that gives them control, significant influence. So, beta, this is not enterprise. This is individual. So, in A and B, it is enterprise. Enterprise means company. Okay, business करने वाले. Individual is under clause C. So, AB is the definition for enterprise. C is for individual. Okay, so individual proprietor or individual person, not proprietor, individual person, if he has interest in the voting power of reporting enterprise, that gives them a control or significant influence. Okay, बेटा, थोड़ा सा theory है ना, तो पर last lecture में अच्छे से explain किया था. In last section, we already understood ये. चलो आगे. Clause D, key managerial and their relatives. Clause E, enterprise over which any person, relative or a person who has control and significant influence or key management have control and significant influence. मतलब they have significant influence in another company, then that company is related to our enterprise. Okay. तो जो कंपनी में हमारे की मैनेजमेंट पर्सनल और हमारे रिलेटेड पार्टी वाले, उनके रिलेटिव्स, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग, वो एंटरप्राइज और हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे. Following are not RPDs. Two companies having common directors. See, they are not key managers. Only two directors. Not MD, not MD. Only common directors. Exception if you have directors after policies of both companies in their mutual holdings. तो बेटा, आप दोनों कंपनी के म्यूचुअल होल्डिंग्स में पार्टिसिपेट करते हो. सपोज इफ यू हैव अ सिंगल कस्टमर, supplier, distributor, franchisee, agent, they are not related. They are your business partners or customers or suppliers. So they are not your related party. Single मतलब एक ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है. Though you have major business with them. Yeah. Only economic dependency. Reason is very simple. Only economic dependency. And your providers of finance. They are not your related parties. Trade unions, no. Public utilities, no. And government department and agencies, no. Though your company is a government company, it doesn't mean that you are all government departments are your related party. No, not at all. If you have any dealing with the government, it doesn't mean that your company has some related party with government departments. No, not at all. समझा क्या ये exceptions है. They are not related parties. तो दो कंपनीज में हम लोग कॉमन डायरेक्टर हो गए, इट डजंट मीन कि ठीक है मैं, हाँ की मैनेजर होगा तो ठीक है, बस डायरेक्टर हूं, नाम के लिए जाना पड़ता है. तो बेटा मेरे पास कोई, मैं उधर जाके कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करता हूं, बस बैठता हूं,
डायरेक्टर फीस लेता हूँ, सीटिंग फीस लेता हूँ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देता हूँ, पर सब पॉलिसीज वही लोग डिसाइड करते हैं. एकदम सिंपल. सी बेटा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे इज्जत दी है. वो कंपनी, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ. हाउ कैन आई गिव यू दिस एग्जाम्पल? हाँ, आपका एक भाई है. यस, वन ऑफ योर ब्रदर. यू, हिज younger one, not married, but he's not living with you. He has another beta home. Already partition has done, but all decisions of that brother is taken by you because he's younger one. He does not have experience. Okay, so you are controlling or you have significant influence in his life. But beta, you have 5, 7 brothers. You are not regularly meeting. So on Raksha Bandhan of brothers sisters, yes, 7, 8 brothers sisters. And if there is a meeting, you participate in that meeting, but you are not taking any decision in simple way. Yes, just you are meeting on that place because you are having relations with each other. It's one of the formality, you can say, and that's why you are visiting their functions. So it is called as only common, brothers and sisters. That's why we know emotionally we are attached, but not controlling their lives. So same decision, common director. ठीक है, और कुछ? और कुछ? If it is important, it is confidential, that you should not disclose your relations, then beta, enterprises duties of confidentiality of specifically required in terms of statute or similar competent authority, in that case you won't disclose it. Intra-group transactions are getting eliminated. In consolidation, holding sold goods to subsidiary, it gets eliminated. And state control enterprises is also better going to other state control enterprises, and transaction with such enterprises are also state control enterprises, is also better eliminated. So because of this consolidated financial statements, we never present the amounts. We give only subsidiary names, but we don't have to tell names, amounts also if intra-group transactions. Okay, that's why you saved from a lot of disclosures. Okay, associates and joint ventures. Associate company means significant influence, and which is neither a subsidiary or joint venture. Joint venture is a contractual agreement. What is joint venture? If there is a contractual agreement between 2 or more parties that we will share some activity, economic pesa, economic activity, money activity, subject to joint control. Suppose Reliance and HP, or HP and Bharat Petroleum, if they are sharing one line, gas line or petrol line, so beta, they have control on that lines, jointly controlled. They are jointly controlled. So you got associates and joint venture. Yes. Holding and subsidiary having more than 50% shares. One or more subsidiaries. A company in which another company itself have more than 1/2 of its nominal value held by. Composition, we already studied this. Need of disclosure. हो गया बेटा, standard is over.
Almost we are at the end of the standard. Need for disclosures. Without related party disclosure, there is general presumption that transaction done on the arm's length basis. Arm's length, beta, arm's length. You can see this is arm's length. When beta, if I record this transaction like this, so it is not arm's length. जितना stretch कर सकते हो. Suppose you are a seller and you are mobile seller. Okay. Buyer is not your related party. So you will stretch the price. You will tell them, so this mobile, suppose if online market is not there, or otherwise you are dealing in better cloths, Punjabi dresses. Any lady visited to your shop, you don't know that lady is not your related party. So you stretch that transaction, you sold that Punjabi dress to that lady at 2,000 rupees. But suppose your sister comes to your shop for buying the same Punjabi dress. Now beta, business में थोड़ा बेटा emotions आ जाएगा. There will be some emotions. So you will sell that same Punjabi dress to your sister at 700 rupees. 2000 का ड्रेस 700, बेटा सिस्टर है. तो related party disclosures. So you have to disclose this related party transaction. Okay, I sold to that Punjabi dress to my sister. It's not at arm's length price, 2000 rupees. No, arm's length, arm's length. Maximum you can stretch is called as arm's length. अरे समझे क्या? Whenever their presumption is not valid, जब आप arm's length नहीं करते हो, price को छोटू कर देते हो, तो it is called as related party exist. And whenever related party exists, you have to disclose. No, sometimes no price is charged to related party, and such terms and conditions you have to disclose. This is the reason. End, khatam ho gaya. Need for disclosures over. And now last part. Arm's length means fair price. Okay. Last one. Consequences of RPDs, related party transactions. What are the consequences? Transactions may not be at arm's length. Affects the operating and financial transactions. Transactions would not have taken place if there will be no RPs. Transaction होता ही नहीं था इतने सस्ते में if no related party fulfill the bad affairs of the management, bad intentions of the management. They can sell it at very low price. Occurrences of frauds. Related party के नाम के नीचे frauds occur होना भी possible है. So occurrences of fraud. तो related parties को disclose किया जाए. Disclosure. बड़ा disclosures की एक बड़ी list है. Related party relationships. Transactions between reporting enterprise and related party. Purpose, related party relationships तो बताए थे ना, joint venture, associate, subsidiary, key management personnel, all beta we have disclosed relations, and also amounts to make the awareness of the existing RPDs and extent to which the affects the balance sheet, profit and loss account and cash flows. Disclosure of RP transaction is a good practice of corporate governance reporting. Corporate governance reporting. ब्रेन जिम शुरू हो गई. ब्रेन जिम. ओ शिट, पहला तो आंसर भी बता दिया.
According to AS18, related party disclosures, parties are considered to be related if and only if they are end of reporting period. End of the reporting period. No, sir, at any time. Any time. So false. Chalo. बताओ 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 बताओ. Second, write down it in comment section. 2, true or false. 2 and true or false. चलो 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 जल्दी आंसर दो. 2 का आंसर ट्रू है या फॉल्स है. Correct answer is false. Related party disclosures, related party transactions is a resource or obligation between related parties provided a price is charged for such transfer. Beta, every time you do not have to only disclose transactions if there. Sometimes relations you have to disclose. Relations also. No need ki price is charged. If there is no transaction, still you will disclose. Which of the following is not a related party as envisaged by AS18? A director of the entity, the parent of the entity, a shareholder of the entity that holds 1% entity, and the spouse of the managing directors. थर्ड का आंसर बताइए. थर्ड का आंसर बताइए. A shareholder holds 1%. Are the following for an answer? For an answer. Are the following statement in relation to related parties are true or false? Which is true or which is false? Yes, which is the correct sequence. The correct answer of 4, true. Both are true. A party is related to another. It is jointly controlled by. Yes, fellow. And a party, it is related to another entity that it controls, holding subsidiary. पढ़ो और बताओ. बताओ बताओ बताओ. According to AS18, related party disclosure, which one of the following is not a related party of Skyline Limited? Shareholder owing more than 30%. Yes, related. Significant influence. Entity provided banking facility. No, not at all. B is the correct answer. He's not a related party.
Thank you, my dear. I hope you understood this standard. It's very easy standard according to me, and you enjoyed this standard. We have taken this MCQs also. MCQ आशा करता हूँ yes. Any difficulty in this accounting standard, beta? Any illustrations? Yeah, we'll take illustrations shortly. If you have any query related to accounting standard 18, you can ask me. Thank you for this accounting standard 18. Now we are going to start with. Yeah, should I first complete the theory part of IS 24 and after the break, can I explain you this accounting standard problems? Can we take it after break, or first should I complete illustrations and after break, beta? चलो बेटा जल्दी बोलो फटाफट. मैं आपके लिए रुका था कि मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा था एक्चुअली. व्हाट आर द क्वेश्चंस? तो ये इसलिए मैं रुक गया. आई हैव टेकन सम पॉज. Illustrations first, problems after break. Sir, your wish. Illustrations. Yes, you only decide. 24. 24 is hardly 30 minutes का स्टैंडर्ड है. 30 मिनट्स एक्सप्लेन कर दूं, फिर ब्रेक ले लेते हैं 7:45 तक, फिर प्रॉब्लम पार्ट्स. ओके चलो. एंड देन लास्ट में ब्रेक के पहले पूरा स्क्रीनशॉट्स. ओके चलो शुरू कर देते विदाउट वेस्टिंग टाइम. S24. क्यों वेस्ट करना ना टाइम? But this standard hardly weightage of hardly in 4-5 years 4 marks. One of the least preferred standard. Least preferred means very simple. So what is the S24? So yes, beta, can you tell me how many standards we have finished till now? S1, 17, 18, 20. This is our 24th standard discontinuing operation. And then beta, last one in the next session. So 6 standards we have finished with. I think we have finished with your first study material. After this, yes, your first study material. Part 1 we have finished with, sir. हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया. एंड यस, याद है आपको पूरे स्टैंडर्ड्स. एंड व्हाट यू हैव टू डू ऑन संडे?
संडे को रिविजन्स करने का बेटा, संडे को बार बार लगातार you have to read your 100 pages book. Today I got one phone call, one of my recorded student. She is from direct entry, I think from Hyderabad. I think from Hyderabad थी या कौन सी सिटी बोली? Yes, from Andhra थी. She called me. She got my number from our Pimpri Chinchwad branch. She called me, sir, I'm getting confused. I think I'm from direct entry, so my basics are not very clear. But so, sir, what is your suggestion to me? But you watch first 3-4 sessions of foundation batch number 6. You complete your journal entries ka pro forma, that basic rules of accounts. Debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. What happens, beta? Many of all over India students, now they are actually watching my all sessions of foundation. They clear their foundation due to our ICAI classes. I got many feedbacks. Sir, previously we joined some other classes, local classes, and we shifted to these ICAI classes. And ICAI is taking wonderful faculties all over India. And we are watching only ICAI sessions. It's not a waste of time. They are stick to their syllabus. And they got clear their foundation. So basically their basics are very, very, very strong. Basics are very strong. So it's my suggestion to all of you. It's my suggestion to all of you. You first, direct entry students, don't get nervous. You will feel this language of accounting standard might be very difficult. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, तो ये मैं पहले ही बोल देता हूं. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. एंड लैंग्वेज लाइक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, historical cost, realizable value. Then you have words like segment, accounting standards, disclosures, transactions, events. And these words, you might feel some little bit confusion in these words. But believe me, if you think for more than 15 to 20 minutes for this subject, please give proper time to each and every subject. I have seen many students, they are just attending classes. I'm telling you the reason for failure. First failure reason. Yes, list down these failure reasons and note down what you are doing from these failure reasons. Number 1, students normally attending classes from morning 8 o'clock to 6 o'clock. This is the first reason of failure. They are visiting their local classes. Every day they are attending 45 minutes. जाना है तो ठीक है, उद्या बोलो, उद्या जाऊन दे. 45 minutes for traveling time. Traveling time is more than 45 minutes, 50 minutes. After in classes, beta, you get, because of your age to apna, those are very senior people. Yes, beta, for them I'm not telling. But age aisa hai, after getting foundation clear, we are feeling like we are a chartered accountants. We can win this India. Yes, your feeling is like you became chartered accountant. But foundation is first step towards your journey. Direct entry students, they have fear in the mind whether we can clear this exam. We are already, we have invested 3 years in the BCom, so we are already over age, and that fear in the mind.
Okay, but I have seen such students of direct entry. One of my student Ashima, she is from I think Assam से थी, तो नहीं हिमाचल प्रदेश की थी. Okay, and she attended online classes. She cleared in the first exam. She has done the wonderful hard work. Then beta what happened I don't know. In second group she joined my subject only, and other subject she has taken it from some private faculties, and she got flung from last 3 attempts. Reason I don't know. She has completed her articleship, but still result failure. This is the reason, because after one group clarity clear, दो ये आ जाते हैं. Please, now it's very simple. Without passing 2 groups, you cannot start your articleship. So you have to anyhow, you have to start with your both groups you have to clear. Okay, then only you can start the articleship. So it's one of the best decision by the institute, even for direct entry. So see beta, first reason, traveling time. I told you, first reason is traveling time. Second reason, after 2 hours, you are changing the subject. Accounts, then you are shifting to costing, then tax, then law. My suggestion, daily 2 subjects, practical, accounts and tax, and 1 subject theory, law, and 1 subject audit on the second day. So minimum 6 hours you should give for your self-study, and 6 hours for classes, 12 hours, 2 hours for your self-reading, another subject, or you have to take better 12 hours in a day. It's okay that you are attending classes every day for more than 12 hours is not possible. 2.5 hours for accounts, 2.5 hours for yes, and 1 hour might be you are watching some previous recorded lectures or auditing or some lectures which you missed. But according to me, you should not miss a single session. Third reason, yes, 6 hours study, 6 hours classes is a best combination. And remaining part, your revisions, 1 and 2 hours. Apart from that, you should go for your gym for 1 hour, or at least for walking, or any, yes, your temple or masjid, whatever the better places, you must visit daily 45 minutes and have some rest after 3 hours. A break is needed. 1 hour you can sleep in the afternoon. That will give you no power snap. Power nap is very important. That power nap के वजह से थोड़ा बहुत change हो जाता है. 1 hour, yes, you can take sleep, power nap. Next reason, you are not revising on Sunday. Sunday to Sunday, you should revise from very first chapter. Maintain your 100 pages book. Maintain your separate notebook for your practical solving. Solving all illustrations. Okay. So बेटा, these are very important points कि आपने ये करना चाहिए, और ये बच्चा करता नहीं है. तो ये रीजन समझ लीजिए कि फेल्योर क्यों हो रहा है. एंड आफ्टर एवरी 3-4 days कीप मोटिवेटिंग. आपको मोटिवेट होते रहना है. Watch some motivational videos and all this. It will help you out, but I won't suggest any motivation, because self motivation is the best motivation. आप जितना खुद से करोगे. Whenever you are getting diverted, beta, watch some past lectures, any subject का. So it will help you out for your revision purpose. तो ट्रैक पे रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो बस हो गया आज का मोटिवेशन, एंड वी विल स्टार्ट विथ अवर S24. चलो S24 में आ जाओ बेटा. यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर S24. और जो भी आपको ऐसा लगता है, हाँ जी बेटा.
होता है। एक सेशन बेटा मैं आपको 4-5 days के बाद ये बोलता रहूंगा. यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विथ मी. आई विल गिव यू 10 minutes फॉर योर डिस्कशन वेन एवर आई विल थिंक yes 10 minutes your problems I can discuss with in next session because we have 2 more sessions. So one session I will keep only for your revision and your problems. Okay, whatever whenever you are feeling कि what exactly happens, हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, doesn't matter. Yes. चलिए. S24 discontinuing operations. What is discontinuing operations? What is the overview of this? First one, introduction. Discontinuing. This is also disclosure standard. Before starting the standard, I will tell you, beta, I have 2 units. One is profit making business and second one is loss making business. For example, suppose for giving the very simple solution, Sanket sir is taking classes of CA Foundation, CA Inter and CA Final, even of Company Secretary and even of CMA. He finds that after a certain time, his interest is in Foundation, CA Inter and CA Final. He has separate, operations. I have a separate team for CA, CS and CMA. And I think that now I don't want to continue assets and liabilities with CS Foundation or CS Inter. I'm not going to continue with the account subjects over there. And he decided to wind it off. So now assets and liabilities which are related to that segment, or you can call it as that segment only. Okay. We decided, no, I don't want to continue with that segment. Suppose 3 different centers I have. For CA, I have a different center. Then for CS, I have a different center, which is located at various places. And all assets and liabilities related to that center of CS, I decided to quit. I don't want to continue with that operation. It's not because of loss making, but I'm really not getting time. And now age is also increasing. So I decided कि भाई बहुत हो गया. And I'm getting satisfaction with my CA Foundation, Inter and Final students. तो बस हो गया, दिन भर इतना किया, accounts तो भी बहुत है. So you are my investors. You are my shareholders. And I am telling you, I'm giving you promise that this business returns won't get affected. It might happen that CS course is more towards theory and Sanket sir is not good in theory. So that might be that operation is in loss and that account subject students are not taking it very seriously. But our chartered accountant students and CMA students, they are taking it seriously. Account subject. CS students, they are not taking account subject, in the way in which actually Sanket sir wants to teach. So he is not satisfied with that branch or that team or that segment. And so he decided to wind it off. So in my financial statements, I must present my operations. One is CS operation, which I'm going to discontinue. And one CMA and CA operations, which I'm going to continue. Sir, giving 2 presentations is called as S24. 2 different, to divide your operations, to divide your assets and liabilities, to give the separate information about your operations is called as discontinuing operation. More transparency. More transparency. You got the concept? अरे बच्चा बताओ ना बेटा.
यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एक बार हिंदी में बता देता हूँ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की जरूरत क्या है, जल्दी से हिंदी में समझ लीजिए, मात्र 2 मिनट में। पहली चीज, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो होता है, सर का एकदम बढ़िया बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस में से सर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, एक बिजनेस है जिसमें लॉस मेकिंग है। तो मैंने, मेरे शेयर होल्डर्स, आप जो मेरे प्यारे प्यारे शेयर होल्डर्स है, यू आर माई इन्वेस्टर्स, तो आप लोगों को मैंने ट्रांसपेरेंटली, मतलब मैंने पारदर्शिता से बताना चाहिए कि मेरे ये जो ऑपरेशंस है, ये मेरे कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, जिसमें से मैं इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं। जब मैं क्लब कर देता हूं तो बेटा मेरा लॉस दिखता है, या प्रॉफिट माइनस लॉस करके दिखता है। मतलब जहां पे मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट है, वो मेरा माइनस लॉस किया 20 लाख का, तो 80 लाख का दिखता है। वो 20 लाख का लॉस मैं बोलो, क्यों मैं ये लॉस अभी सहन करूं, बस हो गया, मुझे नहीं सहन करना है, काई को मेरे शेयर होल्डर को मैं लॉस सहन करने लगा हूं। तो मैं ऑपरेशन बंद करता हूं, उनके ऊपर मेरा भरोसा है, उसको मेरे पे भरोसा है कि मैंने ऑपरेशन भी बंद किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेटली बताया जाएगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को सेपरेटली बताया जाएगा, यही तो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, other disclosures and points to remember, खत्म, खलास, फिनिश, एकदम मस्त। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन। The standard provides guidelines for the disclosure and presentation of information related to discontinued operations in the financial statement of an entity. Okay, discontinued operation in the financial statement of the enterprise. Compliance with AS24 ensures transparent reporting and enables stakeholders to better understand the financial implications of the entity's discontinued operation. Sir, compliance with accounting standard AS24, ये ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है सर, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग के लिए। और जो हमारे शेयर होल्डर्स है, उनको भी हमारे ऑपरेशंस के बारे में समझ में आ जाता है। मीनिंग, सर डेफिनेशंस को रट्टा मार, ध्यान दीजिए। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन थ्रू अ सिंगल प्लान, एक ही प्लान में निपटा डाला, पूरा ऑपरेशन खत्म, फास्ट डिसीजंस, हम लोग रुकते नहीं हैं। थ्रू अ सिंगल प्लान, डिस्पोजिंग ऑफ एंटिटी, डिस्पोजिंग ऑफ, खत्म कर देना एंटिटी को, और इन पिसमिल, टुकड़ों में, मतलब एक ही प्लान बनाया, टुकड़ों में डिवाइड करके, प्लान एक ही प्लान, बट वी विल फर्स्ट लिक्विडेट दिस एसेट्स, देन पिसमिल, पिसमिल मतलब टुकड़ों में, इन पीसेस, डिस्पोजिंग ऑफ इन पीसेस मतलब टुकड़ों में ऑपरेशन को खत्म करना, नॉट एक साथ। और थ्रू अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट मतलब रुकवाट, रुकावट, खत्म कर दिया, मतलब बेचा बिचा नहीं, अबेंडनमेंट, एक्सेप्शन, change in the scope or manner of operation. See beta, this is very simple. I will give you the exception answer. Do you remember that Nokia mobile which have a keypad wala mobile? Nokia beta, I remember my college days, 3315 येलो कलर का मोबाइल आता था। उसके बाद आई थिंक 6610 व्हाइट कलर का डिस्प्ले होता था। उसको ऐसा बड़ा वाला शेप नहीं था, थोड़ा छोटे होते गए मोबाइल। देन बेटा एक युवराज सिंह वाला मोबाइल था, युवराज सिंह का मोबाइल, फ्लिप का मोबाइल था, ऐसा फ्लिप का मोबाइल, और वो एंगल चेंज करके हम लोग उसको घुमाते थे और फोटो निकालते थे, युवराज सिंह ऐड करता था। एलजी का मोबाइल था, बहुत पुराने दिन में बता रहा हूं, जब हम लोग कॉलेज में थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 2003। ओके, मोबाइल क्रेज, फिर ऐसे बहुत सारे, फिर वो मोबाइल पे पहली बार सॉन्ग देखना, तो एकदम
अरे बाप रे, मोबाइल पे सॉन्ग, इज इट पॉसिबल? हम लोगों को वो बहुत भारी लगता था, नहीं तो अपना स्नेक का गेम। ओके, सो सम ओल्ड डेज। एंड फिर वो गाने बेटा वहां पे, और तब का हीरो तो कौन था? इमरान हाशमी। तो अभी नहीं बताया तो ये अच्छा है उसके बारे में। हाँ जी, और मोबाइल पे दिखता था, तो मम्मी पापा गलती से आ गए तो एकदम डर लगता था। तो अभी तो क्या, जाने दो, अभी नो नीड टू टॉक ऑल दिस थिंग्स। तो बेटा वो मोबाइल का टाइम, वी शिफ्टेड सी फ्रॉम दैट, यू नो, कीपैड मोबाइल टू टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे आविष्कार हो गया। अपनी मम्मी भी बड़ा, हमारी मम्मी बड़ा 65 ईयर्स की, और बराबर व्हाट्सअप पहली बार जब टच स्क्रीन आया, ये क्या है, ये कैसे मैं चलाऊंगी? हाँ, उसको तो अपना वो डायल वाला मोबाइल। अभी तो इतने टच स्क्रीन, फेसबुक व्हाट्सअप ये जोर जोर से चलाती है, जाने दीजिए, क्या बोले उस बारे में। हाँ, तो पहले तो मुझे 10 बार सिखाना पड़ता था, मम्मी दिस इज द गूगल मैप, इसमें से आपको जाना है। ये रैपिडो, मतलब रैपिडो तो अभी पुणे में नहीं है, हाँ, बट आपका ओला उबेर, ये ओला उबेर में नहीं बुक करेगी। अभी तो पूरा किटी पार्टी, किधर भी चलो, चले तूने यहाँ छोड़ने को, ओला उबेर के साथ मैं निकल जाऊंगी मोबाइल से। हाँ, तो नाउ दिस स्कोप फ्रॉम नाउ सी, नोकिया हैज नॉट शिफ्टेड बट सैमसंग ने शिफ्ट कर दिया। सैमसंग ने नोट लाया, फोल्ड लाया। ओके, सो नोट सीरीज, फोल्ड सीरीज, आईफोन का सीरीज, तो वैसे ही सीरीज पे सीरीज आते गए। ओके, फिर 15 तक पहुंच गए आप लोग। नोट में आई थिंक 20, मेरा 21 आया, एंड देन दे स्टार्टेड विद S23। फ्लिप का 5 चल रहा है। ओके, सो दिस आर, they shifted from the technology of keypad to touch screen, and you stopped your activity of जो भी आपका डिपार्टमेंट था which manufacturing that keypad, you stop, but that is a change in the scope, it is not discontinued operation. You abandon that activity, but it doesn't mean that you stop mobile production. So this is not discontinued operation that I want to explain you. So this is not discontinued operation. So your activities are regularly you are doing it. Okay, but you stop, you shifted to new version from keypad to touchscreen. Okay, so this is not the discontinued operation. Okay, understood the concept? हाँ, yes. बेटा, मैं जब सीए इंटर हुआ था, तब पापा ने, मुझे याद है, वो युवराज सिंह वाला मोबाइल लिया था, और पूरे क्लास में मेरे अकेले के पास वो मोबाइल था। यस, इतनी बात मुझे मेरे पापा से मिली थी, जो मैंने उनको बोला था, पापा मुझे लाइफ में कुछ नहीं, मेरा इंटर होने के बाद मुझे सिर्फ वो, कभी मैंने मोबाइल, क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड्स मोबाइल यूज करते थे और मेरे पास मोबाइल ही नहीं था। और एक था मोटरोला का, बहुत ही डेंजरस, मतलब वो कीपैड वगैरह, पर मेरे पापा ने मुझे फिर तब युवराज सिंह वाला वो मोबाइल, और क्या बेटा शान से मैं वो घुमाता था पूरा मोबाइल। ऐसा लगता था तब कि यस, जैसे रजनीकांत का जो चक्कू रहता है वैसे। हाँ जी। ओके, तो तब तो हमारा बर्थ हुआ था। क्या रे हार्दिक, हाँ, इतना बूढ़ा हूं क्या मैं? ओके, थ्रू अबेंडनमेंट, exception, change in the scope or manner of operations. Change in the scope of manner of operation is not the discontinuing operation. Remember, so how you are going to discontinue? Through a single plan, in piecemeal, in disposing of entirety, and last one is through abandonment. But if you are changing the scope of operation, it doesn't mean that you discontinue the operation. Yes, yes or no, beta? Remember definition. Abandonment मतलब बंद करना। हाँ, कार्तिक ने बता दिया। अबेंडनमेंट मतलब बंद करना बेटा, स्नेहा। Like now we are going to CA classes through online,
rather than going live sessions. Very good, beta. Live sessions, face-to-face classes बंद करके. In Pune, we had a big, face-to-face classes for CA final students. So when I was in CA final, सब 200 students थे. And then I remember one of the faculty, I won't tell you the name, he had more than 700 students in one classroom. Imagine CA final key batch when there were no online classes. And see, now he is my sir also. He has only 2 or 1 student in face-to-face classes. I don't want to criticize anyone, but just I'm telling the scope how it got changed. And better then I had taken a decision. Yes, now no more face-to-face classes, only shifted to online classes. Online say I can reach up to any level ना बेटा. इंडिया के बाहर भी जा रहा हूँ. Yes, so दुबई के बच्चे भी देखते हैं. Even in our Aisha, she is from Dubai. Okay. Some students are from Nepal. They are also watching the sessions. So it's possible due to these online classes. I cannot reach to only Pune-based student. I want to see big dream. I should reach to maximum students. And is this possible? Is change in the scope of manner of operation. It doesn't mean that I stop my face-to-face classes, means I have abandoned the operation. No, I have changed the scheme of operation. Okay. So this is called as change in the scope. Very good, beta. Very good. How practically you can connect these examples, no? Okay. Next is, so you understood the scope. Digital transformation. Very good, beta. Discontinuing. So definition में second part. Discontinuing. रट्टा मार definition. Separate major line of business. You are going to discontinue. And geographical area of operation. Sir, business segment and geographical segment. Sir, the problem is that, suppose now you aware about the Israel war, and I thought, no, suppose I have one business line in Israel, or I am thinking by now it's very difficult. Suppose I'm dealing in the gold and I have some operations in Israel and I stopped that operation because I have a lot of risk over there. And therefore I decided to abandon or discontinue the geographical area operation. How practically you can connect with ना? हाँ जी बेटा, पैलेस्टाइन के लोगों ने लगातार ये चीजें किए और हमास, आप सबको पता ही होगा कि हमास के सबसे शातिर कमांडर कैसे डेंजरस हो सकते हैं. तो ये देख लीजिए, मतलब discontinuing major line, that is a business line or geographical area. Number C, distinguishing components, sir. Last part of the definition. Distinguishing component means operating assets and liabilities is called as distinguished component, or revenue, or majority of operating expenses. So beta, this is also a component is different and you want to discontinue that operation. So you can identify through a single plan, discontinuing that major line of the business or geographical area, and distinguish component of operating assets and liabilities, revenue, and majority of operating expenses. Very simple. Asset, liabilities, revenue, and expenses. So distinguish component, this is called as discontinuing operation. जो आप बंद करना चाहते हो. Okay, my dear friends, you're getting the definition. What is the discontinuing operation? Can be directly attributable होगा तो. Exceptions, very, very important. You may get questions on this. So first one,
Exceptions, I'm not going to explain it today. It's your duty to read the standard because मैं हमेशा आपको standard एक समझा देता हूं and you will read by your own. Third one, when is the initial disclosure event is also your homework. When first time you will present your financial statements in the form of continuing operation and discontinuing operation. So you will first time record ये कब होगा is also your homework. Initial disclosures. And what to disclose? Other disclosures की एक list है. And points to remember में ये last part है जो आप लोग खुद से read करने वाले हो. And you are going to tell me. So 2 homeworks, exception and initial disclosure. I explained you in detail about discontinuing operation, definition, and expect from you, आपसे मुझे उम्मीद है कि you will read exceptions and you will read disclosures, and in next session you will answer my all questions. ठीक है? Yes. तो आपको मुझे ये बताना है नेक्स्ट सेशन में कुछ स्क्रीनशॉट्स फॉर, अच्छा A18 के पूरे स्क्रीनशॉट्स दे दिए थे क्या मैंने A18 के? यस, टेल मी माय डियर फ्रेंड्स. हाँ बेटा, आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रीड इट. इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि संकेत सर ने होमवर्क दिया और स्टूडेंट ने नहीं सुना. 100% आई नो दिस थिंग्स कि संकेत सर इफ ही गिव्स होमवर्क यू आर गोइंग टू लिसन एवरीथिंग. यस बेटा, उसमें नहीं सुना तो आपका ही छे नुकसान. इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता. ओके गुंजन, क्या लॉजिक लगाए हो सर? व्हेन योर एज इज बिटवीन 40 to 45, because when you were in inter I was not born. I am 20, so you must be plus 21. क्या लॉजिक है? कहां से आते हैं ये लोग? ओके स्क्रीनशॉट्स फॉर S20. 100 पेजेस के बुक के कंप्लीट हुए थे, 400 के बाकी थे. चलो दोनों साथ में दे देता हूँ, छोड़ो मैं भूल गया हूँ. नाउ आई ऑल्सो हैव नॉट रिमेम्बर क्या है क्या नहीं है. चलो पहले 18 दे देता हूँ. S18. अरे दिया है यार, S18 100% दिया है. S18 आई थिंक गिवन, एक गिवन है रे. पिछला लेक्चर देख लो. आई थिंक S18 का थ्योरी आई हैव गिवन यू. कॉन्सेप्ट 6 तक दिया है ना. हाँ जी बेटा, अनमोल आई नो दैट. S18 already given. Problem part. Yes. Mamta Yadav is asking me, sir, how you are always motivated and amazingly you explain every concept. Motivated is because I'm getting money. जोक्स अपार्ट कि मनी मिलता है इसलिए मोटिवेटेड रहना जरूरी है. ठीक है, जोक्स अपार्ट बेटा, ऐसे पैसा देती है वो बात अलग है, बट रिमेम्बर आई लाइक टीचिंग. दिस इज ओनली द रीजन.
आई केप मोटिवेटिंग. ठीक है. सेकंड वन, मोटिवेशन इसलिए होता है कि यू ऑलवेज गिव कमेंट्स एंड आई ऑलवेज लाइक कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स देख रहे हैं. दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म, सो आई मस्ट यूटिलाइज इट प्रॉपरली एंड यू मस्ट टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. एंड दिस इज ओनली द रीजन why always so much motivated during the lecture. And I'm enjoying my lectures always because I never get understand how it's 7:30. Just I started my session 1 hour back. I really don't understand how I come to know the session is getting over. No, never. Okay. Next one. Don't think like it. No, it's your syllabus. It's your real life. So enjoy this journey. Is only motivation that I can give you. चलो बस हो गया. H24 का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सा डेफिनेशन रे. हाँ जी. स्क्रीनशॉट्स. थैंक यू मानसी. इंट्रोडक्शन पार्ट. यस, स्क्रीनशॉट ले लो. एक सेकंड, एक सेकंड. हाँ, अभी ले लो पूरा. सो ये कॉन्सेप्ट 2 तक हो गया. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नो बेटा, S6 कॉन्सेप्ट 6 आई टोल्ड यू नॉट टू टेक. 400 पेजेस का देता हूँ. 400 पेजेस का आज देने वाला हूँ बेटा स्क्रीनशॉट. डोंट वरी. Discontinuing and distinguish component. Only in one definition. मैं कितने घंटे स्टडी करता था, जाने दो आप, पागल हो जाओगे. बेटा मैं कम से कम 18 घंटे स्टडी करता था, कम से कम. क्योंकि मुझे जब तक कॉन्सेप्ट के डिटेल में मैं नहीं जाता था, तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती थी. मैं पूरा ब्रेक करता था कॉन्सेप्ट को. एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, थियोरी कभी नहीं अच्छी लगी यार मुझे. जो है वो बता रहा हूँ. एक्सेप्शंस आई हैव गिवन यू. यस. 7 सेकंड्स देता हूं मैं. इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. पुणे में कहां से हो तो बेटा, पहले सदाशिवपेट, अभी कात्रज कोंडवा शिफ्ट हुए हम लोग. यस. Sarvana ji asking for screenshot comes in monthly magazines, articles. No, sir ji. Please, please, please. At the end of the session or before break, I always give screenshots time. So in this session, I change lot of techniques. Only explanation in the first half, and then screenshot I give separate time. Thank you, beta. Parth Rana ji. How to manage 18-hour study? Only thought about becoming a CA in the first exam is a key for working 18 hours in a day. Only one and one aim in your life. Sir, cash flow statement, we have a separate chapter, Ashwini ji. So I have not taken that cash flow statement. We will take it in accounting standard chapter number 11. I already told you about this. राहुल रुलाएगा क्या बेटा?
चलिए, कॉन्सेप्ट 5 पॉइंट्स टू रिमेंबर. मिस रिम्पा जी, क्लासेस का प्लेलिस्ट बेटा ऐप से खोलिए ना. ऐप से खोल दिया तो बेटा आपको पूरे अकाउंट्स के लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे. आप बीओएस ऐप के थ्रू खोलिए बेटा. ओके. यस. ओवर. ओवर बेटा. Here we have finished with this standard. Okay, now you can take a break. ब्रेक ले लीजिए. T. Give a break of 15 minutes.
चलो, वेलकम बैक वंस अगेन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का कुछ क्वेश्चंस बेटा फटाफट. ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाफट ध्यान दीजिए. यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कमेंट सेक्शन में आ जाइए. हाँ, और वेलकम बैक वेलकम बैक. चलो चलो चलो, ज्वाइन फास्ट ज्वाइन फास्ट ज्वाइन फास्ट. हो गया, एक बड़ा ब्रेक ले लिया आप लोगों ने. ब्रेक में आपने, मुझे पता है, रोहित शर्मा की 100 भी देख लिए रहेंगे. देखो आज. ओके. अच्छा, एस 18 का इलस्ट्रेशंस. Okay. At the end, beta, I am giving you screenshots. I think illustration one we have finished with off. You can check your answers. चलो, अभी हम लोग आंसर्स के टूवर्ड्स जाते हैं. एस 18 क्वेश्चंस. हाँ जी. 11 we have finished with. A limited 51% in B limited. चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. A limited holds 51% in B limited. B limited holds actually O limited में 51%. ये एक्चुअली डायग्राम गलत हुआ है. A limited 51, B limited 51 in O limited, and Z limited holds O limited में 49%. So how to write the answer in exam? Facts of the case. Then you have to write provision of S. So see, this is how you have to write it in the exam. I will give you time for taking screenshots at the end. Facts में you have to define, provisions में you have to define control. Control definition already beta we have seen, and also significant influence. Both definition, whatever the important points. Conclusion: B Limited is a subsidiary, hence related party. O Limited is a subsidiary company of B Limited, so indirectly A Limited is hence is related party. तो B Limited, A Limited का कौन कौन related है? B and O. B Limited का controlled by, so A Limited होगा, and O Limited controls. B Limited controls O Limited. O Limited का A Limited अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, ओ लिमिटेड का जेड लिमिटेड इज एसोसिएट, मतलब ओ लिमिटेड इज एसोसिएट, एंड जेड लिमिटेड का ओनली ओ लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी. ओके, एसोसिएट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ है नहीं, तो जेड लिमिटेड का ओनली एंड ओनली ओ लिमिटेड या एमपी है. ये याद रखिए, जेड लिमिटेड का ओनली ओ लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी. तो ए का बी एंड ओ, बी का ए एंड ओ का ए बी जेड, एंड जेड का ओनली ओ. एनी डिफिकल्टी? यस. यस मिस सईद. चलो, एनी डिफिकल्टी बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 ए कैटेगरी का क्वेश्चन था, एकदम मास 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 क्वेश्चन था. एनी डिफिकल्टी इन क्वेश्चन 1? सो हाउ टू राइट द आंसर ऑल्सो बेटा आई एक्सप्लेन यू. बेटा 100 पेजेस के बुक का ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया है अवनी, इन लास्ट सेशन में लिया हुआ है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.
इल्यू टू ए लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड में एंड सी लिमिटेड में, एंड बी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड. प्रोविजन ऑफ एस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? सी लिमिटेड related party to A Limited. Yes, C is in related party S Limited as ultimate holding company controls indirectly C Limited. देखो डायग्राम के हिसाब से 30 plus 22. So ultimately 52% हुआ, and ultimate company controls. C is associate of A Limited and A Limited is investing party and hence related party, and also through subsidiary. ओके, तो बी कंट्रोल्स बी को कंट्रोल कर रहा है और बी कंट्रोल कर रहा है 30%. तो इनडायरेक्टली दोनों मिला के 52% परसेंटेज. यस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओवर. ओहो बेटा, समझ में आ गया. क्वेश्चन 2 ओवर. क्वेश्चन 3 आई थिंक. एक्स लिमिटेड होल्ड्स 28%, वाई लिमिटेड 32%, जेड लिमिटेड. वाई लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड and is related party, and Z Limited is associate of Y Limited related party, और associate का associated is not related. इधर पांचों का डेफिनेशन देना था, तो यहाँ पे आपको associate का associate ये related party नहीं है. 4 already explained, 5 already explained, 6 and 7 already explained. So 6 7 भी already explain किया था बेटा. If you remember, 5 explain था. 6 में भी रिलेटेड था. 7 एट एनी टाइम रिलेटेड था. हाँ, 8 एक्सप्लेन करता हूं. 8 यूके लिमिटेड होल्ड्स. चलो ध्यान दीजिए. यूके लिमिटेड होल्ड्स 23% इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स इन पी लिमिटेड. पी लिमिटेड में 23% है. 23% मतलब लिखो यहां पे associate, but it's a bank. The bank has provided a loan at market interest rate. As per terms and conditions of the loan agreement, the bank has appointed one person as its nominee of the board of directors of P Limited, and any major transaction to be entered by P Limited with received will require the consent of the bank. Okay. So that P Limited, one person is appointed in the board, and only for major transactions take consent. Okay, so बैंक ने एक बंदा अपने हिसाब से लगाया हुआ है. बैंक has appointed one person on behalf of bank. He is working. He is not any actually taking decisions. Only his consent is required. Provision. As per AS 18, if an investing party holds directly or indirectly through subsidiaries 20% or more of the voting power of the enterprise, it is presumed that the investing party has significant influence unless it is clearly demonstrated. ये line बहुत जरूरी है. That this is not the case. The standard also said the providers fund finance are not deemed to be related party. Exception की list थी 3 लोगों की. Common director,
providers of finance and government and that trade union and all. Single customer franchisee. Okay. So beta, financer is not deemed to be related party. Conclusion. (23%). If further, in spite of UK Bank being the provider of finance, the exemption stated above will not be available to UK Bank since it exercises the significant influence. Because every time that person's consent is required. तो याद रखो हर टाइम पे वो बंदा एटलीस्ट इन्फ्लुएंस करेगा ये लाइन के वजह से. एंड ड्यू टू दिस लाइन AS18 यहां पे एप्लीकेबल होगा. AS18 यहां पे एप्लीकेबल होगा ये लाइन के वजह से. गॉट द कॉन्सेप्ट? गॉट द कॉन्सेप्ट बेटा? यस. होल्डिंग का बेटा, वो लिमिटेड होल्डिंग का बात सुनेगा गुंजन. होल्डिंग का बात सुनना जरूरी है. मम्मी पापा और भाई बहन में बेटा मम्मी पापा का बात सुनना पड़ेगा भले इच्छा हो या ना हो. डायग्राम इन एग्जाम इज नॉट नीडेड. एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर if transaction occurs, so at least you have to disclose. But amount you not need to disclose if transaction occurs after relationship is over. Okay. So transaction is not important to record. See the example first. Okay. P holds 22% shares and voting rights in Q Limited. Associate. On 1st April, he sold goods 5 lakhs. Okay. On 30th June, P sold entire 22% shares. So now no more relationship. However, P Limited continued to supply goods on 30th June. It is called as intercompany transaction. Okay, intercompany transaction. Just like any other customer and sold goods worth rupees 15 lakhs. So whether answer is, देखो आंसर कैसे लिखना है. Provision, if there have been transaction between related party during the existence of related party relationship, the reporting enterprise should disclose. In the instant case, only transaction between P and Q till 30th June are required to be disclosed. Transactions occurred after 30th June are not required to disclose. It's very simple. 30 जून तक के ट्रांजैक्शन आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. आफ्टर 30 जून नो नो नो. यस, अंडरस्टूड. 10 number. नर्मदा लिमिटेड हो गया बेटा. स्टैंडर्ड ओवर. लास्ट क्वेश्चन है. देन वी आर गोइंग टू सी TYK ऑफ S20 and over. Narmada Limited sold goods 9 lakhs to Ganga Limited during the financial year ended 31st March 2001. The managing director of Narmada Limited owns 100% shares of Ganga Limited. The sales were made to Ganga at a normal selling price by Narmada Limited. The chief accountant of Narmada Limited contains sales need not require a different treatment from other sales because other sales made by the company are same treatment and hence no need to disclose it. No, 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 beta, you are wrong. MD of Narmada is a key management personnel. KMP holds 100% in Ganga Limited, clause C, and hence Narmada and Ganga are related party. Irrespective of whether the transaction were done at the normal selling price, clause E, therefore contention of chief accountant is wrong. Compulsory you have to record C, D, and E.
तीनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। देखो, नर्मदा सोल्ट मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब की मैनेजमेंट पर्सोनेल, गंगा लिमिटेड का 100% शेयर्स रोक रहा है, यस मेमडी, क्लॉज डी। केएमपी होल्ड्स 100% इन गंगा लिमिटेड, सी, सी नहीं बेटा, ई है ये ई है, डी एंड ई, सी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लो बेटा, 10 नंबर भी हो गया। Mr. Raj is the relative of key management personnel. It's similar to 9 number is similar to beta. Yes, I will show you. 9 number is similar to index. देखो बेटा, 9 number is similar to 7, 9 and 10. Both are anytime during the year. Anytime during the year. Both answers. And 11 number is similar to TYK 1. ILU 1. So TYK all are already covered. Okay, TYK सभी illustration में covered है. You can read TYK questions and now you can take screenshots. चलो 18 के screenshots ले लो, 18 के screenshots ले लो बेटा। 400 pages book का। वेरी गुड मानसी। नेक्स्ट 5 6 7 7 सेकंड्स में काउंट करता हूं मन में। ओके, 8 9 10। बट आई वॉन्ट अपलोड दिस आंसर्स, इट्स योर ड्यूटी टू टेक। तो वॉच लेक्चर वॉच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशंस 1, प्रोविजन, ए लिमिटेड, ओके 2, राइट इट टुडे इटसेल्फ। 400 पेजेस के बुक में आज के आज लिखना है, नहीं लिखोगे तो बाद में बड़ा पछताओगे बेटा। each and everything I cannot give it in writing. Try to understand. We have to finish our syllabus within time. So it's your responsibility. After the class, you have to write it in your 400 pages book. ये आप सब लोग लिखने वाले हो। I have given it very beautifully बेटा, all these illustrations. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रहा हूं आपको, how you are going to present these answers in exam, and that's why I told you कि this standard is easy to understand but very difficult to write, and therefore please note down all these answers properly.
हो गया बेटा, हो गया। हो गया, और 5 ही क्वेश्चन है। 6, 7। ओवर बेटा, रुको रुको रुको, थोड़ा ही बचा है। डोंट गो एनीवेयर। सर के छोड़ के जाने वाले हो क्या? इसके बाद S20 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं ना, बस उतना कर लेते हैं। In next session, I am going to explain you S24 remaining part, and 25 we will start, and illustrations of S24. Pen and conclusion last. Open your S20. Over. TY के 9 की थियोरी है ये। ये तो सेम है, डोंट राइट दिस, ऑलरेडी रिटर्न। नको, नहीं 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 लिखना है। यस, टीवाई के, और ये मत लिखो टीवाई के, यू कैन राइट बाय योर ओन नाउ। चलिए, सो वी हैव फिनिश विथ S18. So let's start with last part, S20. Today I'm going to write it, answers. Now this part, I told you to take this answer after S24. X Limited during the year has continuing operation 2,40,000 and loss 3,60,000. The company has 1,000 equity shares and 200 potential equity shares. As per S20, potential equity shares to be treated as dilutive, and only when conversion to equity shares would decrease the profit. Okay, we are aware about this. As income from continuing operation is 2,40,000, we will consider 2,40,000 basic EPS minus 3,60,000. So your basic EPS is divided by 1,000 shares. So 2,40,000, 2,40,000 minus 3,60,000 divided by 1,000 shares. My basic EPS will be minus 120. If I calculate diluted EPS 2,40,000 minus 3,60,000 and divide by 1,200 shares, because in diluted EPS you will consider 200 potential equity shares. See,
It's your numerator. Numerator 1200 minus 100 is minus 100 is higher than basic EPS. Okay. Suppose if I consider only 2,40,000, we will consider only 2,40,000. It is 240 if continuing operation, and 2,40,000 divided by 1,200 is only from continuing operation. See, only from continuing operation, it will be dilutive. But if I consider both, minus 120 to 100. देखो मैं लैंग्वेज वापस से पढ़ता हूं. Try to understand the language. S20 potential equity shares would be treated as a dilutive EPS only when conversion to equity shares would decrease the net profit from continuing operations. From continuing operation, if it is decreasing. As income from continuing operation, we will consider 240 and would we consider and not 120. And 200 shares. Potential equity shares are dilutive or anti-dilutive. Accordingly, if I divide by 1,200, my EPS goes down by 240, say 200. And therefore, I will record, though I am getting the higher than basic EPS, but my continuing operation, I am getting lower diluted EPS. I will present it. I will present it. ध्यान देके सुनना. मैं वापस से ये एक्सप्लेनेशन देता हूं. वैसे देखने गया है, वैसे देखने गए, एक बार हिंदी में समझ लो. वैसे देखने गए और हमने कंटिन्यू और डिसकंटिन्यूइंग दोनों को पकड़ा, तो माइनस 120 का माइनस 100 हो जाएगा. और बेटा माइनस 100 इज ग्रेटर देन माइनस 120. तो आप बोलोगे सर फिर बेसिक ईपीएस नो नीड टू प्रेजेंट. वेट, when there is a discontinuing operation, we will continue, we will show only continuing operation. We will calculate. Calculations are using only continuing operation. And if basic EPS is greater than diluted EPS, then though you are getting the higher diluted EPS, you will present it after considering discontinuing operation. मैं वापस बोलता हूं, हमने दोनों का ये एक्सेप्शन में जाता है. सर एक्सेप्शन में कैसे जाता है? बेसिक ईपीएस मेरा माइनस 120 आया, डायलूटेड ईपीएस मेरा माइनस 100 आया. बेटा मैं इतना ही बोलूंगा कि भले आपका डायलूटेड ईपीएस इधर ज्यादा है, वैसे देखने गए तो ये एंटी डायल्यूटिव है. स्टिल एंटी डायल्यूटिव मतलब क्या? अर्निंग कम नहीं हो रहा है, अर्निंग बढ़ रहा है. माइनस 120, देखो याद रखो, माइनस 100 ये ग्रेटर देन माइनस 120 होता है. पर आपको ये भले एंटी डायल्यूटिव होगा, बट स्टिल रिकॉर्डेड. क्यों रिकॉर्डेड? क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है उसका ईपीएस डाइल्यूटेड का कम है. आप चेक किसका ईपीएस करोगे? यू विल चेक डाइल्यूटेड ईपीएस. किसका डाइल्यूटेड ईपीएस चेक करोगे? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, भले दोनों का मिक्स करने के बाद माइनस 100 आया तो भी. ओके, क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आईएमपी मार्क करना. सो फॉर dilutive or anti-dilutive continuing operation, and still you will record it. Okay, चलो. हाँ जी. A listed company
On 1st April 2001, the following capital structure: 10 lakhs equity shares and preference dividend 1 crore 8%. Profit after tax 90 lakhs. कितना है? 90 lakhs. 1st January 2002, ये 31st March एंडिंग है. Bonus issue for every 2 equity shares. Bonus issue 10 lakh shares plus 5 lakhs, 15 lakhs. And on 1st January, NAT 2 lakh equity shares of one each at their full market price. On 31st March 2002, no use. Further, it has been provided that basic EPS for the year 31st March 2001 was 62.30. ठीक है. ये आंसर चेक कीजिए बेटा. देखो, I will give it in the writing. अर्निंग्स अवेलेबल टू, अच्छा ठीक है, कैसे लिखोगे? ईयर ईपीएस. टू थाउजेंड. What is given? 2000, 2001. Write down the answer. 2000, 2001. मेरे साथ ही लिखो. बेसिक. बेसिक ईपीएस कितना है बेटा? सी बेसिक ईपीएस इज गिवन 62.30. 2001 एडजस्टेड. एडजस्टेड कितना? देखो, लास्ट ईयर के शेयर्स. अच्छा, इसको हम लोग वर्किंग नोट 1 बताएंगे. एंड 2001 टू बेसिक वर्किंग नोट 2 बता देते हैं. ओके, सो दिस इज योर मेन आंसर. नाउ वर्किंग नोट 1. adjusted EPS of 2000, 2001. Earnings available to equity shareholder divided by existing shares and plus bonus shares issued in 2001-2. अभी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अर्निंग पर शेयर ऑफ 2001 एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने? 10 lakhs plus 5 lakhs.
So 10 lakhs into 62.30. 41.53. $41.53. Working note 1 over. Understood, beta? Working note 1 over. Working note working note 2, 2023 basic. Sorry, 1-2. Sorry, it's a 1-2. Step 1, step 2. After 5 lines, write down step 1, earnings available to equity shareholder, serial number, particulars, rupees, Roman 1 PAT, 90 lakhs. Less preference dividend. Preference dividend 1 crore into 8%. So earnings available to equity shareholder 82 lakhs. 82 lakhs. Write down 82 lakhs. Step 1 तो मिल गया. Step 2, number of shares. Weighted average. Weighted average. Date. Number of shares. Number of months till 31st March. Product. Date 1st April 2001. How many shares are there? 10 lakhs. 12 by 12. 10 lakhs. Bonus. Date ignore. All 12 months. 5 lakhs. 5 lakhs. And issue 2 lakhs on 1st Jan. 2 lakhs. 3 by 12. 50,000. 15,50,000. So I will divide by 15,50,000 and EPS is 5.29. Check the answer. Yes. 5.29. See the presentation. Step 1 and step 2. Very simple. Beta, remaining 2 questions we'll do it in the next session and I will show you the answer also to take the screenshot. Till that time, beta, thank you and good night. Now we are going to meet on Friday. Friday blockbuster. Yes.
आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। आप लोग आज रिविजन्स करोगे और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिख के दिए हैं आपको, कंप्लीट कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है, A+ कैटेगरी। चलो, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मनीष।